গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ সৎবুদ্ধিৰ মন্ত্ৰ। ওম ভূৰ্ভুৱঃ স্বঃ তৎসবিতুৰ্বৰেণ্যং ভৰ্গো দেৱস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্ৰচোদয়াৎ। নিচামুক্ত ভাৰতৰ বাবে গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ এক সাৰ্থক পদক্ষেপ। অখিল বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ জনক পৰম পূজ্য গুৰুদেৱ যোগঋষি পণ্ডিত শ্ৰীৰাম আচাৰ্য মহাশয়ে পৰিয়াল, সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশৰ বাবে নিচাক এক অভিশাপ ৰূপে গণ্য কৰিছিল। পূজ্য আচাৰ্য মহাশয়ে তেখেতৰ ভাষণসমূহত প্ৰায়েই উল্লেখ কৰিছিল যে নিচা অৰ্থাৎ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি এক অভিশাপ। এই আসক্তিয়ে মানুহৰ শৰীৰ আৰু আত্মা দুয়োটাকে নাশ কৰে। দুৰ্ব্যসন অৰ্থাৎ কু আসক্তিৰ বাবে মানুহৰ শৰীৰ, মন আৰু বুদ্ধি বেয়া হৈ গৈ আছে আৰু ই বৰ্তমান প্ৰাণঘাতী শত্ৰু হৈ পৰিছে। দুখৰ বিষয় এই যে নিচা যে সৰ্বনাশৰ মূল শিপা, সেই কথা সমাজে কেইবা দশক ধৰি দোহাৰি আহিছে যদিও এই নিচাই দিনক দিনে নিজৰ শিপা সমাজৰ আৰু বেছি গভীৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাইছে। ইয়াৰ মাজতে অখিল বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিয়ালে সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি থকা সৃজনশীল সৈনিকসকলৰ মাধ্যমেৰে এই দিশত সাৰ্থক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিগত দিনসমূহত অখিল বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আদৰণীয় ডক্টৰ চিন্ময় পাণ্ড্যাই ভাৰত চৰকাৰৰ নিচামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অন্তৰ্গত সামাজিক ন্যায় আৰু আধিকাৰিক বিভাগৰ লগত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। इस देश के 15% युवा आज हमें नशे से जूझते अपने जीवन की उम्मीदों को बर्बाद करते दिखाई पड़ते हैं, और वो जो भटके हुए हैं वो और कोई नहीं है, हमारे ही भाई है। उन्हीं को सही राह पर लाने के लिए आज गायत्री परिवार यहाँ आकर के उपस्थित हुआ है। 6 करोड़ के करीब लोग अल्कोहल से जूझ रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग ओपियोइड से, हेरोइन से, नार्कोटिक्स से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ के करीब लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं, और इन सब को दिशा में लाने का कार्य गायत्री परिवार को करना है। এই চুক্তি অনুসৰি সমগ্ৰ দেশতে গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যক্ৰমসমূহত ভাৰত চৰকাৰৰো সহযোগিতা লাভ কৰিব পৰা যাব। আদৰণীয় পাণ্ড্যা মহাশয়ৰ বাইত ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে এই কথা পোৱা যাব যে ৮০ৰ দশকৰ পিছত সমাজত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ এটি মুখ্য কাৰণ এই যে ভাৰতৰ যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈয়ে যিদৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে, তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে পৰিয়াল, সমাজ আৰু দেশৰ অনিষ্টহে কৰিছে। সেইবাবে যদি সমাজৰ একেবাৰে আগৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে সমাজক সঠিক পথ দেখুৱাবৰ বাবে কাৰ্য কৰে, তেন্তে এই অসম্ভৱ যেন লগা কাৰ্যও সম্ভৱ হ'ব যেন বোধ হয়। যদি তথ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় তেন্তে এই সত্যটো প্ৰতীয়মান হয়। যদি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ স্থিতি বিষয়ক শেহতীয়া তথ্যসমূহত চকু দিয়া হয় তেন্তে এইবোৰ একেবাৰে ভীতিজনক। ইয়াৰ 10%তকৈও অধিক লোক অৱসাদ, নিউৰোচিছ, মানসিক বিকাৰ আদি বিকাৰেৰে পীড়িত। ইয়াৰ লগতে প্ৰতি 1000ৰ ভিতৰত 15জন ব্যক্তিয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰে আৰু প্ৰতি 1000ৰ ভিতৰত 25জন ব্যক্তি স্থায়ীভাৱে মদ্যপানৰ প্ৰতি আসক্তিৰ চিকাৰ হৈছে। এইদৰে সমগ্ৰ দেশতে 80% মানসিক ৰোগী আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তিৰে পীড়িত লোকসকলে হাস্পতালৰ সুবিধাও লাভ কৰিব নোৱাৰা হৈছে। মানুহৰ মাজত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি ইমান ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে যে বহু ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত সেৱন বা সেৱন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বহুতে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিছে। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰো NCRBৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তিৰ বাবেই 2021 চনত 10,000তকৈও অধিক লোকে নিজৰ জীৱন লীলা সমাপ্ত কৰিছিল। দুৰ্ব্যসন অৰ্থাৎ কুকৰ্মত আসক্তিৰ বাবে আত্মহত্যাৰ ক্ষেত্ৰত দেশত উল্লেখনীয় বৃদ্ধি হৈছে। প্ৰতি বছৰে 1000তকৈও বেছি নতুন সমস্যা ইয়াৰ লগত সংযোজিত হৈ গৈ আছে।
বৰ্তমানৰ এই বিষম পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অখিল বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ দুয়োগৰাকী প্ৰমুখ শ্ৰদ্ধেয় প্ৰণৱ পাণ্ড্যা মহাশয় আৰু শ্ৰদ্ধেয়া শৈলদিদিয়ে দেশবাসীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই কৈছে যে নিচাৰ এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ সমাজৰ প্ৰবুদ্ধ লোকসকলে এক মহান দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব আৰু এই দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल की साक्षी में हम शपथ लेते हैं कि हम आज से स्वयं कभी किसी प्रकार के गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे। अपने परिवारजनों को भी प्रेरणा देंगे कि हमारा परिवेश नशा मुक्त बने। हमारे वेदों में नशेबाजी को महापातक बताया गया। महापातक सबसे बड़े पातक कुछ हैं, उनमें महापातक जो है वो नशेबाजी। भाइयों बहनों, घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण नशा है। नशा उन्मूलन होगा तो गैंगरेप भी बंद हो जाएंगे। नशा उन्मूलन होगा तो ये बलात्कार होते हैं, ये बंद हो जाएंगे। नशा उन्मूलन होगा तो अपराधों की जड़ समाप्त हो जाएगी। अगर हमने अपराधों को समाप्त कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये हमको सबको सोचना पड़ेगा। যুগঋষি পূজ্য গুৰুদেৱে যি ব্যসনমুক্ত সমাজৰ সপোন দেখিছিল, সেই সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ বাবে গায়ত্ৰী পৰিয়াল আৰু দেৱ সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূৰ্ণ একাগ্ৰতাৰে কৰ্মত নিযুক্ত হৈ আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও নিচামুক্তিৰ অভিযান চলাই আছে। आदरणीय भैयाजी बाइट। ये बड़े गौरव का विषय है कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के स्थापित आंदोलनों में दुर्व्यसनों से मुक्ति को आज से 50 वर्ष पहले चुना। यहाँ पर बड़वानी की टीम बैठी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आज से 4 वर्ष पहले उन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ किया और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो बच्चे अपना अपना कुर्ता लेकर चल पड़े, बोले आप दान दे दीजिए। लोगों ने सोचा कि शांतिकुंज वाले तो पैसे मांगते नहीं, ये लोग क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा आपको क्या देना है? बोले नहीं, हमको आपकी सिर्फ बीड़ी दे दीजिए, आपकी सिगरेट दे दीजिए, आपको शराब दे दीजिए। लोग जो थे फूट फूट करके रोए। पूरा गांव बदला, शहर बदला, देश बदला। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। देखेंगे कहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, উৰিষ্যাকে ধৰি দেশৰ অনেক ৰাজ্যত গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ সাধক আৰু সচেতন যুৱক যুৱতীসকলে বাটৰনাট, সমাৱেশ, আলোচনা চক্ৰ, পদব্ৰজে বা বাইকেৰে বা চাইকেলেৰে শোভাযাত্ৰা আদিৰ আয়োজন কৰি জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে। ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহ দুৰ্ব্যসনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাইছে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত হোৱা অনিষ্টসমূহ, বেমাৰসমূহ আৰু মানসিক অৱসাদৰ প্ৰতি সচেতন কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰি আছে। ইয়াৰ লগতে মানুহক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তিৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ আদিৰ আয়োজন কৰি আছে। বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ অনিষ্টকাৰী প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সচেতন কৰিবলৈ সাহসী কাৰ্য কৰি আছে। সংগীত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত নহ'বলৈ, বিশেষকৈ যুৱকসকলক বিড়ি, চিগাৰেট, মদ আদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰু এইবোৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বেমাৰসমূহৰ বিষয়ে প্ৰদৰ্শন কৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি নাইকিয়া কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া হয়। বন্ধুসকল, ऐसा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। विराट रैली जो आज आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रदेश सरकार से, बंद करिए इस शराब के व्यापार को। इसको आप बंद कर देंगे तो विश्वास मानिए हमारे इस राज्य में
बहुत से अपराध कम हो जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत बचेगी और हम सब एक राम राज्य की जो परिकल्पना करते हैं उसको यथार्थ रूप में पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, देश की शक्ति नारी है, पंजाब की शक्ति नारी है, की शक्ति नारी है। क्या है एक ही सपना, नशा मुक्त हो सपना, नशा मुक्त हो अपना देश, नशा मुक्त हो अपना देश। बंद करो भाई बंद करो, नशा देश से बंद करो। আপোনালোকক জনাওঁ যে বিড়ি চিগাৰেট আদিৰ ধোঁৱাত ৪,০০০তকৈ অধিক বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে। এইবোৰৰ ভিতৰত ৫০টামান অকল কেঞ্চাৰৰে কাৰক নহয়, বৰং তাতকৈও বেছি বিষাক্ত নিকোটিন, কাৰ্বন মনোক্সাইড আদি এইবোৰত পোৱা যায়। আপোনালোকে জানে যে ধূমপান কৰাৰ আটাইতকৈ বেছি কুপ্ৰভাৱ আমাৰ চকু, হাওঁফাওঁ আৰু হৃদপিণ্ডৰ ওপৰত পৰে। ধূমপান কৰা লোকসকলৰ যিবোৰ ৰোগ হয় সেইবোৰ ৰোগ পিছলৈ ধূমপানকাৰীৰ লগত থকা লোকসকলৰো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। কিয় জানেনে? বৰ্তমান বিশ্বৰ ২০০ কোটি লোক ধূমপান কৰাত আসক্ত। যদি আপুনিও নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰে তেন্তে আজিৰ পৰাই সাৱধান হওক। আপুনি এজন অভিজ্ঞ যোগ প্ৰশিক্ষকৰ পৰা ভস্ত্ৰিকা প্ৰাণায়াম, কপালভাতি প্ৰাণায়াম, অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়ামৰ বিধি শিকি লওক। নিচাযুক্ত বস্তুৰ প্ৰতি আসক্তি আঁতৰাবলৈ অতিকৈ উপযোগী পশ্চিমোত্তানাসনো আপুনি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে এগিলাচ পানীত ২ চামুচ মৌ আৰু ২ চামুচ নেমুৰ ৰস মিহলাই দিনত ২ বাৰ খালে নিচা নাইকিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও আদাৰ চচ, আজৱাইন, কলা নিমখ আৰু নেমুৰ ৰস মিহলাই লৈ ২-৩ বাৰ খালে ভাল ফল পোৱা যায়। দেৱ সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি আঁতৰাবলৈ ধ্যান আৰু প্ৰাণায়ামৰ কৌশলো শিকোৱা হয়। एक व्यक्ति के व्यसन को छुड़ाने का काम करना है, उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने का काम हमें करना है। तो क्या किया जा रहा है? करने की दृष्टि से जो पहला कार्य हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का एक जगह पर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने का काम कर रहे हैं। व्यसन मुक्ति के नाम से एक नई वेबसाइट का निर्माण शांति कुंज की IT सेल के द्वारा किया गया है। तो जो नई वेबसाइट है व्यसनमुक्ति.awgp.org, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जितना गंभीर कार्य गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है उसको एक जगह पर हम लोग अच्छे से जानकारी के रूप में, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ले आएँ। साथ ही एक ईमेल भी खोला गया है ताकि यदि किसी को इससे संबंधित जिज्ञासा हैं, प्रश्न हैं, सुझाव हैं, समस्याएं हैं और यदि वो अपने अपडेट देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को पहुंचाना चाहते हैं तो इस व्यसनमुक्ति@awgp.org जो हम लोगों का ईमेल एड्रेस है इस तक पहुंचा पाने की स्थिति में होंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, जितने प्रज्ञापीठ हैं, जितने प्रज्ञा संस्थान हैं और आज के बाद जितने होने वाले कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों में एक अनिवार्य शर्त हम जोड़ दें कि जो व्यक्ति आकर के बैठ रहा है उसको इस संकल्प पत्र को पूरा करना है, संस्कार को निश्चित रूप से पूरा करके ही बैठना है। क्योंकि आप तंबाकू खा करके भगवान का मंत्र कैसे बोल सकते हैं? आपके पास यदि हृदय में भावना है और आप गंगा जल को हाथ लगाने जा रहे हैं तो उसी हाथ से आप शराब को कैसे हाथ लगा सकते हैं? पर इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य हम लोगों को पब्लिसिटी नहीं है, इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य प्रेजेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है। इतना बढ़िया काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है कि यदि हम किसी को एक जगह पर, एक स्थान पर अच्छी तरह से दिखाना चाहें तो वो दिखाने के लिए उस सारी सूचना का एकत्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। न केवल आप उन स्टिकर्स को प्राप्त कर सकते हैं, उन सद्वाक्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस साहित्य के सेट को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस एग्जीबिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम जगह जगह पर दिखाने का कार्य कर सकते हैं। प्रज्ञा गीत भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखाए गए अनेकों हैं जो कि इस दुर्व्यसन से छोड़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, संकल्पित करते हैं, उत्साहित करते हैं। प्लेलिस्ट के रूप में शांति कुंज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न के द्वारा आपको उपलब्ध भी कराई जा रही है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जब बात गीत की आई है तो ये भी बता देना उचित होगा कि एक नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला भी लिखी गई है। यहाँ से ऐसे नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला को लिखा गया है जिसका कोई भी कहीं पर भी मंचन कर पाने की स्थिति में है और लोगों को बता सकते हैं कि ये जो नशे की लत है वो कितनी ज़्यादा बुरी है, इससे कितना ज़्यादा व्यक्ति का नुकसान हो रहा है और क्यों इसको छोड़ने की आवश्यकता है। आदरणीय ভায়াজীৰ বাইট, এটি গৱেষণাৰ পৰা জনা গৈছে যে যদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে যুৱক যুৱতীসকল সচেতন নহয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া এনেদৰেই চলি থাকে তেন্তে এনে এদিন আহিব যেতিয়া দেশে যুৱ প্ৰজন্মৰ শৰীৰৰ বোজা কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই ভাগৰি পৰিব আৰু তেনে পৰিস্থিতিত
ভাৰতক বিকশিত আত্মনিৰ্ভৰ আৰু সমৃদ্ধ ৰাষ্ট্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ বহুত বেছি সময় লাগিব। সেয়ে আহক যুগঋষি পূজ্য পণ্ডিত শ্ৰীৰাম আচাৰ্য মহাশয়ে আৰু অখিল বিশ্ব গায়ত্ৰী পৰিয়ালৰ দিব্য সপোনৰ ভাৰতক দিঠকত ৰূপ দিবলৈ নিজৰ চিন্তা আৰু সময়ৰ এটি অংশ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। লগতে বিচাৰক্ৰান্তি অভিযানক সুদৃঢ় কৰোঁ, যাৰ দ্বাৰা ব্যসনমুক্ত সমাজৰ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে, সুস্থ আৰু সবল ভাৰতৰ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে। এই কাৰ্যৰ বাবে আপোনালোক আটাইকে আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদ। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।